Ethics, principles, and morals cannot be compromised. As a Muslim, I believe that we will all be held accountable for our position, our statements, our views, our opinions, and how we conduct ourselves when we are conflicted. And so, the issue of Kashmir, it's an important issue because as someone who was born in Kashmir, there is a close affinity. And arriving into the UK at a very young age, we had the privilege of education that we took advantage of, and we managed to succeed and aspire, hopefully, others in our communities, that you can achieve so much if you are committed. And I say being born in Kashmir has that strong affinity, but the reality is that when our forefathers arrived in this country, the topic of Kashmir was not prevalent. They were very simple people, working as laborers, and so for them it was about creating a better life for themselves, for their families that were still living in Kashmir, and that objective was prime. But the bigger strategic objective was never something that our forefathers engaged in. And it's understandable, because we have so many issues that sometimes we forget a bigger picture. Palestine and the destruction of Gaza, the mass murders which we all witness, the genocide which is taking place, that is an important topic. And it's an important topic for politicians, for communities. But ask yourselves this: the atrocities that we witness in Palestine are no different in reality to the atrocities that so many Kashmiris face. So many Kashmiris. You've heard stories about Indian-occupied Kashmir, young girls being raped, mothers being raped. They're being raped in front of their male family members as a mechanism of torture, as a mechanism of compliance. And so I say that because when we look at how we are pushing forward the cause of Kashmir, because that's paramount, knowledge is important, and being able to filter that to all communities, because I am a firm believer that any firm and reasonable-minded person can see injustice. They can see injustice. Whatever the media and mainstream media want to press forward as a narrative. So we have an obligation to make sure that we can talk about this injustice. Asking for a referendum for a community to self-determine. There's nothing controversial about that. I mean, we did that here with Scotland, and one of the speakers talked about it. Let the people decide what is suitable to them as a community, what is beneficial to them as a community. And so as a parliamentarian, of course, for me as an independent, I have no party whip. And so no party policy can dictate to me what I should advocate. And of course it would be my function as a parliamentarian to speak to other parliamentarians. Just because I'm independent does not mean that I sit in one corner and just talk about topics in the House of Commons. It's more. It's about engaging other parliamentarians. And it's about talking about issues such as this. To have a common purpose, a common platform where we can all work together to raise this issue. Britain cannot just simply ignore it. I mean, we're part of the United Nations, and United Nations resolutions have asked for this. So if we as a democracy, and our fundamental building block is respecting law, respecting resolutions, then there's no reason why we can't push that agenda. And inshallah, I will obviously do whatever I can. But a few words in Puri, because I think it's also important that the wider audience gets to hear what I have to say. Asani, यानी बुजुर्ग ऐसे इस मुखाबिब थे, उन्हें वैसा ज़्यादा तौर अपनी नौकरी नहीं ये सी ज़रूरत थी या कि लोग पैसे कमा सा आमदन कमा सा
मुड़े तो असा अपने फैमिली पाकिस्तान कश्मीर में जेड़े असा छोड़िए उन्हें असा आमदन कमासा फिर ये सारे बच्चे थे उन्हें तालीम उन्हें वसा जी फ्यूचर बिल्ड कर सा यानी कि कश्मीर का मामला इंपोर्टेंट ही नहीं सा चंद बंदे थे और भाई मसूम साहब बैठे माशाल्लाह काफी उम्र कई बुजुर्ग हो जिन्हें कि तुसा की पोलिटिकल एक्टिविज्म हमेशा रही अपने नाज़िम साहब के पीछे बैठे हुए इन्हें कश्मीर बारे मिकी एजुकेट किया सईद साहब इतना के बैठे हुए ये असा की सियासी जानने आ गया इन्हें असा की हाईलाइट किया या एक मामला कश्मीर और असा की अगर ये बंदे ना पाने असा की इल्म कोई सा असा ऐसे ठीक है जी असा यूके विच हां इस बारे असा की ज़्यादा कदर कोई से ना ज़्यादा सोच सी और इस दौर में असानी एक जिम्मेदारी है यानी कि जिस तरीके से फलस्तीन का मामला तो किसी ख्याल पूरी दुनिया में जेड़े मिसाल चलो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर होने पे जेड़े जुल्म होने पे वो इतनी पब्लिसिटी और सोशल मीडिया में नहीं अचीव और ये अज जी पूरी दुनिया है ना सोशल मीडिया ने दौरा और इस विच असा की सोचना चाहिए किस तरीके असा बेहतर तो बेहतर ये स्टोरी जी कश्मीर की है या जुल्म कश्मीर जो है किस तरह अवाम की नॉलेज देना क्योंकि नॉलेज तो बगैर कोई जज्बात नहीं अच्छा ना कोई बंदे की इंथ्यूजियाज्म अच्छा साथ बुझो जी तो को मुसलमान धियां भैन की इज्जत उठने पे उन्होंने घर वाले सामने कितना हूँ जज्बा या जो इंसान को है तो ये बड़ा जुल्म है ये किस्म की असली जी है स्टोरी इतनी फैलनी नहीं ये जुल्म होने इस तो अलावा भी तो कोई इंसाफ नहीं गल है अगर एक कम्यूनिटी होनी चाहिए असा अपना फ्यूचर आपू असा वोट करने चाहे एक यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास होया वा इस विच एक कानूनी चीज़ है और इंशाल्लाह असा आसू कमन विच जेड़े लाइक माइंडेड बंदे उन्हें की जरूर जेड़ा असा पार्लियामेंटेरियन की बेसा उन्होंने गुफ्तगू कर सा बेशक टोरी नहीं हो बेशक लिबरल कंसर्व कोई भी जमात है रिफॉर्म के ना हुआ क्योंकि असा एक अपना एजेंडा पेश करना एक एजेंडा असा पेश करना या एक कश्मीर का जो मामला यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन होया वा इस पर कानूनी चीज़ है असा की पुश करना चाहिए और इंशाल्लाह इस तरीका ताबे करता और इस तो अलावा भी अर्ली डे मोशन जरा मैं तुसानी ग्रुप नाल मुलाकात करी तो असा ने एम पी ने होना ना तुसा अर्ली डे मोशन पेश करी सकते उस क्या होना या तुसा मोशन पेश करनी हो और फिर ये एम पी होने पूरे मुल्क ने हर जगह असानी कम्यूनिटी आई है जिथा नी भी असाने बंदे जेड़े इस इनजस्टिस की जानने उन्हें एम पी की तुसा हो जी इस मोशन की तुसा सपोर्ट करो सियासत सारी पोलिटिकल प्रेशर नहीं होनी ना अगर वो अर्ली डे मोशन की ज़्यादा तो ज़्यादा एम पी साइन करें फिर वो डिबेट बन जाए फिर उन्हें अपनी लाजमी गुफ्तगू होनी उस पर लाजमी वोट पाई सकनी और बासियत मैं एज ए इंडिपेंडेंट असें की कोई यानी कि शैकल कोई बंदा असें की दबा नहीं सकना असा बगैर जमात जो असा इमोशन अर्ली डे मोशन पेश करी सकना बाकी फिर तुसों भी कम आ या एम पी के आने चाहिए मोशन की की नहीं सपोर्ट कर रहे हो एक स्टेट वोट मोशन है यूनाइटेड नेशनल रेजोल्यूशन पास होया वा और वो आने पे या इन बंदे की अपनी वोट रेफरेंडम होना चाहिए तक माने कोई ऐसा एम पी नहीं साइन कर लगा क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग अदर दैन that referendum to be given to the people of Kashmir, whether you're Pakistani occupied Kashmir or whether you're Indian occupied Kashmir, it doesn't really matter. The community needs to be given the ability to decide its own future. I'm sorry I can't be spending more time to listen to other speakers here. I've got to get to another event, but it's an honor and privilege to be here. Thank you very much for being so attentive.